Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss characters. First of all, must have made information pattern from biology chromosome as a taxonomic first used by botanists and then it was used by biologists and cytological techniques over the past several years now studies even such difficult groups as members. Due to improvement in different cytology techniques that were type of animals, their chromosomes now cytological techniques, taxonomic character. एक्सक्यूज मी सर सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? यस सर बिल्कुल भी नहीं आ रही। जो पढ़ रहे हैं कि क्रोमोसोम्स का जो रोल एज ए टैक्सोनॉमिक करेक्टर है, तो जो हमारे पास क्रोमोसोम्स को हम एज ए टैक्सोनॉमिक करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले इनको बोटानिस्ट ने इसको यूज़ किया फॉर क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, देन zoologist which find animals after the use of botanist. ये आ रही है आपको? नो सर की आवाज आती है फिर डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाती है। Improvement in cytological techniques over the past several decades now permit chromosome studies such difficult animals and birds and other groups with many small chromosomes are harder to work with them or with their few large chromosomes and those that joint ciliary chromosomes is suitable for taxonomic studies. It means the use of these chromosomes are classifying different type of animals varies from to group. The taxonomic character more frequently used by the early cytogenetics was CRISPR. Since then सर बहुत increasing ज्यादा pairing of डिस्टॉर्शन है। additional additional chromosomal characteristics has been discovered which could be used to determine degrees of relationship. Means जो हम क्रोमोसोम को एज ए टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हम साइटोजेनेटिक्स को यूज कर रहे थे वो बेसिकली क्रोमोसोम था। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्रोमोसोम की हमने डिस्कवर कर ली हैं, तो उसके बाद वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रोमोसोम की हम उनको भी यूज करके जो है हम उसको क्रोमोसोम्स के नंबर के बेस पर क्या कर सकते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं। Species and higher taxa of animals may differ by an extraordinary number of phenomena: paracentric inversion, pericentric inversion, translocation, and presence of concentrated heterochromatin. It means the species of higher group of animals may also differ in different chromosomes, including paracentric inversion, pericentric inversion, translocation, and presence of diffuse or concentrated heterochromatin. It means we have additional
number of information about the chromosomes, and these chromosomes higher animals are higher group of higher taxa of animals classify different animals basis of these chromosomal phenomena. And when we talk about the fine structure of chromosomes, the fine structure of chromosomes can be brought out by appropriate staining methods that show G band, C bands, or Q band. It means banding. Staining method, we stain different parts of chromosomes, and that can be used as a identification method for classifying chromosomes number and group of animals. And now, not only these staining patterns, wealth of detail, they are highly conserved in some groups convincingly documenting relationship, which means when we discuss the staining patterns different group animals, then these staining patterns are also observative. They are also conserved in some groups that conservation of um, banding patterns show that they are showing relationship between different groups. Then the phylogeny of horses, asses, and zebras has been greatly clarified by the comparison of these chromosomes. When we talk about the phylogeny of horse, asses, and zebras, their phylogeny has been cleared by comparing the number of chromosomes in these horses, asses, and zebras, because the number horses, asses, and zebras differ from species to species. And the greatest value of chromosomal information is that it can serve as a check on biological molecular and other types of information. It means the chromosome information forms a check on other morphological and other types of information that we use to classify different type of animals. And chromosomes are particularly useful on two levels, on different levels. It means when we use chromosome for classifying different type of animals, it has two benefits. One benefit is that at the low level they aid in the comparison of total species. It means they help us in case of species to classify them into different groups. Talk about sibling species, then sibling species are more often different in chromosome than they are in external morphology. It means when we talk about sibling species, then sibling species are similar in morphology, but they are different in chromosome number. So by using chromosome number, we can find different type of species which are often shade characters. That why for sibling species classification we use to classify them in different groups. And in higher hexagram pattern may be of extreme importance establishing phyletic lines. It means when we check the pattern of in higher animals, helpful help us find or understand the importance of establishing phyletic lines. Then the next structure that was in animal taxonomy to classify different type of animals is molecular characters, and the major molecular intentions were made by earliest organisms. Even the most primitive prokaryotes have, on the whole, the same kinds of macromolecules and metabolites that are found in higher animals and plants. Still, there is specificity at every taxonomic level, and this specificity increasingly exploited by taxonomy. It means for classifying
type of animals we can use molecular characters, study of macromolecules like DNA, protein can be helpful classifying their found, and the serology provided the earliest widely used method of comparing protein. It means in earliest times to compare the proteins of different animals. Serology was used, and this method based on the principle that proteins of one organism show a stronger antibody reaction to the protein-related organisms that they will resistant-related organism due to technical difficulties we face in serology. This method has not been very successful in establishing the using this serology as a director for classifying different type of species which are found. And recently, much recent work has been devoted to developing a taxonomy of specific macromolecules. Early techniques of diffusion chromatography used capillary action to separate molecular paper. In this method is clearly spotted on the paper dipped on a solvent. And movement of solvent carries different molecules at different rates, so that different samples different produce different patterns of spots that represent various components of the sample. It means with the passage of time we the methods that are used for classify different type of animals. तो इसके साथ साथ हम अब ये जो टेक्निक यूज़ की जाती थी वो डिफ्यूजन क्रोमेटोग्राफी है, और वो कैपिलरी एक्शन को यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास मालिक्यूल्स थे उनको पेपर के ऊपर सेपरेट करती थी, और इसके अंदर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कैरीज डिफरेंट मालिक्यूल्स एट डिफरेंट रेट्स, सो द डिफरेंट सैंपल्स produce different pattern of spots that represent various components of a sample. Diffusion chromatography. Diffusion chromatography has largely been replaced by electrophoresis. It means now we did not use diffusion chromatography. Instead of diffusion chromatography, we use the process of electrophoresis, which uses an electric potential instead of capillary action and hydrolyzed starch or polyacrylamide instead of filter paper. And the improvement of resolution has been obtained by processing samples a second time at 190 degrees to the first run to produce a dimensional separation. And a large number of new molecular techniques have been introduced in the early days of serology and electrophoresis. They make the protein DNA and mitochondrial DNA. यानी इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं जिनको हम यूज़ करके मॉलिक्यूलर कलेक्टर के तौर पे यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनिमल्स हैं हम इन मॉलिक्यूलर कलेक्टर्स की बेस के ऊपर क्लासीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी आवाज़ आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है पर थोड़ी आहिस्ता है। चलें मैं तो वैसे ऊंचा बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलें लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, तो अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जब रिकॉर्डेड सुनेंगे तो वो आपका इशू हल सॉल्व हो जाएगा। सर अब आपकी आवाज बेहतर हुई है। तो अब उर्दू में पढ़ाऊँ? मतलब आपकी आवाज ऊंची हुई है थोड़ी। चलें a study of restriction side mapping of ribosomal DNA showed the value of this method in establishing relationships in genus Rena.
It's mean when we use the restriction site mapping of ribosomal DNA, then this method is very helpful in genus Rena to discover their phylogenetic relationship. And the molecular method that provides the greatest amount of information is the sequencing of proteins and nucleic acids, and the number of differences in the base pairs of two nucleic acids reflects the number of mutational steps that separate them. It's mean when we use the method of sequencing of proteins and nucleic acid, then it means we will find differences in the base pairs of two nucleic acids. It means when we find the differences in the base pairs of two nucleic acids, it means that the number of mutational steps have occurred in these two type of nucleic acid. That's why the number of bases in these two nucleic acid vary from DNA to DNA. इसका मतलब ये है कि जब हम सीक्वेंसिंग मेथड को यूज़ करते हैं प्रोटीन्स के और न्यूक्लिक एसिड्स के, तो फिर जब हम ये सीक्वेंसिंग मेथड यूज़ करेंगे तो जो डिफरेंट डीएनए होंगे उनके अंदर जो बेस पेयर्स होंगी उनके अंदर डिफरेंस होगा, और वो जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली उन डीएनए के अंदर जो म्यूटेशनल स्टेप्स होंगे वो उनको बेसिकली क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. And the same technique can be applied to amino acid replacement in protein, but this provide much less information. It means कि DNA sequencing के method के अंदर हम DNA के अंदर जो different बेसिस का कॉम्बिनेशंस है उसको फाइंड आउट करते हैं और उसको डिफरेंट स्पीशीज़ के डीएनए के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर उनके अंदर जो डीएनए के डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली हमें उनके दरमियान जो म्यूटेशनल स्टेप्स होते हैं, ये जो उनके अंदर म्यूटेशन होते हैं वो उसका लेवल क्या कर रहे थे, इंडिकेट कर रहे होते हैं. और अगर टू डिफरेंट डीएनए जो आप स्पीशीज़ के कंपेयर कर रहे हैं, अगर उनकी सिमिलैरिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है या उनकी बेसिस के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक दूसरे के साथ बहुत रिलेट करते हैं या वो जो स्पीशीज़ हैं वो आपस में क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ हैं. अगर आप टू डिफरेंट स्पीशीज़ के डीएनए को कंपेयर कर रहे हैं सीक्वेंसिंग के मेथड के थ्रू, उनकी बेसिस को आप देख रहे हैं, तो अगर बेसिस के दरमियान जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि वो आपस में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ नहीं हैं. और द सेम टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू अमीनो एसिड रिप्लेसमेंट इन प्रोटीन, बट दिस प्रोवाइड मच लेस इंफॉर्मेशन. इट मीन्स वी कैन यूज सीक्वेंसिंग मेथड फॉर proteins as well, but to find out their amino acid sequence, but this method is not useful as DNA sequencing method that is more accurate and provide more information that is helpful in classifying different type of animals. Next is molecular evolution and use of molecular evolution permits inferences on the probable time of
स्टूडेंट्स अभी आपको पीपीटी शो हो रही है? यस सर। वो डिस्कनेक्ट हो गया था and we were discussing about molecular information and use of molecular information permits inferences on the probable time of splitting phyletic lines and some the split event. For instance, the immunological distance of line also and with the position of island that is before islands are merged. And the next is these and chronologies can also be established through the chain point. Inodont's phylum is reality a certain gene regulatory mechanism. Alpha subtype histone transfer RNA originated in the light Triassic. Orders of aconites that originated after that. And next is what is the importance of different molecular techniques and when the techniques and molecular techniques are used at different taxonomic level and study of mitochondrial DNA that of electron and useful for comparison of fusions and closes. It's mean कि जब हम जो है मालिक्यूलर पैटर्न टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं तो ये फिर हमें मालिक्यूलर लेवल के ऊपर जो स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंसेस हैं जैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो लेवल पर जो उनके चेंज हैं वो इंडिकेट करते हैं और अगर हम उस चेंज को यूज़ करेंगे तो फिर हम ज़्यादा एक्यूरेट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स कर सकते हैं and the next characters that we use find different type of behavior characters and behavior is undoubted most important taxonomic character it means कि behavior character है वो एक important source है taxonomic characters के तो and indeed behavior characters are really superior to morphological characters in the study of related species particularly close species it means when we morphology for classifying find sibling species then in case of sibling species morphology does not provide accurate information because took at species then they are similar to each other but they are actually different species and for sibling species we just observe their behavior characters and pair of sibling species different from each other study of two sibling species then different for both species and that behavior character can be classified type of species cannot be classified on a basis of characters and for their classification we use classify them however there are two major technical drawbacks जब भी हम जो है जो हमारे पास बिहेवियर फैक्टर्स हैं हम यूज़ करते हैं तो इसके दो बड़े नुकसान हैं एक तो ये है कि बिहेवियर कैन नॉट बी स्टडीड इन प्रिजर्व्ड मटेरियल इन केस ऑफ फॉसिल स्पीशीज कैरेक्टर्स हैं ये हम यूज़ नहीं कर सकते हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि प्रिजर्व मटेरियल को प्रिजर्व डेड होते हैं तो हम
बिहेवियर कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर कैरेक्टर किसी भी लाइव इंडिविजुअल है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. And another drawback of behavior character is that there's some type of during a जब आप बिहेवियर करके डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, बिहेवियर हर टाइम के ऊपर आप उनका पर्टिकुलर नहीं देखते. फॉर एग्जांपल स्पीशीज का ब्रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्पीशी का ब्रीडिंग होगा और आप हर वक्त उस ब्रीडिंग नहीं कर सकते, तो आपने उसके ऑब्जर्व करना है टाइम के ऊपर. इसी तरह अगर आपने बाज पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप जब भी चाहें वो बिहेवियर स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि टाइम के ऊपर शो करते हैं, तो कैरेक्टर को यूज करती होती. बट देयर इज अनदर बेनिफिट ऑफ यू behavior characters, and that is a great technical study of behavior has been the development of device sound recording and translation of sounds into patterns. It means जो हमारे पास हम different type of study करते हैं, तो हमारे पास type of instruments develop हो चुके हैं. that instruments हैं वो different type of जो sounds को record करते हैं, फिर हम उस sound को पैटर्न के ऊपर क्या करते हैं, हम शो करते हैं बारे में ज़्यादा से ज़्यादा है, हम उसको क्या करते हैं, हासिल करते हैं. फॉर एग्जांपल मोर देन 3 स्पीशीज ऑफ discovered due to their songs. It जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन के बेसिक insect species which is found in North America, they produce different type of song patterns, and by the use of the sound recording instruments, their sound was recorded, and then that sound was translated patterns. Different species of North American kids have different sound patterns. That's why their graphic pattern was also different, to which they were classified as different species because they resemble to each other ecologically, but species, and these different species were recognized due to behavior characteristics, and that behavior was just to record the sound and convert their sound patterns into graphic patterns, and that graphic patterns show differences in sounds, due to which the species of beside this, the classification of species in several genera has been greatly helped by the analysis regarding. के अलावा जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स के जेनरा हैं, एम्पीडोनक्स है, उसके अंदर साउंड्स के डिफरेंट पैटर्न्स जो स्पीशीज प्रोड्यूस करती थी, उन साउंड्स के पैटर्न को स्टडी किया गया, और जब वो साउंड के पैटर्न को स्टडी किया गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, तो वो पैटर्न डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. इसके अलावा जो हमारे पास बिहेवियर कैरेक्टर्स हैं, इसकी वजह से कंपैरिजन ऑफ कॉज ऑफ फ्रॉड shed light on a relationship between previously established species. It means जो हमारे पास फ्रॉड्स और टोड्स हैं वो टाइप ऑफ साउंड प्रोडक्शन करते हैं. Normally they produce sound during reproduction time. जब वो reproduction time पे वो different type of sound हर जो फ्रॉग species है सिग्नल्स होती है उसकी
फीमेल उसको रिकॉग्नाइज करती है और एक्सचेंज करते हैं। जनरली इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, डिफरेंट साउंड पैटर्न्स थे या वो जो डिफरेंट को प्रोड्यूस करते थे उसकी वजह से उनकी कॉल्स को रिकॉर्डेड किया गया और ग्राफिक पैटर्न्स के ऊपर ट्रांसलेट किया गया। की वजह से हमारे पास जो फ्रॉग की स्पीशीज थी वो आइडेंटिफाई हुई। बजाय तो एक पैटर्न्स को डिस्कस पैटर्न्स के ऊपर, तो पैटर्न्स था स्पीशीज के मुकाबले में डिफरेंस से फ्रॉग स्पीशीज के आइज हुई। इसके अलावा ये जो स्पीशीज थी बारे में भी हुई। इसके अलावा थी टेलीफोन इंपैरेटिव neurons, and that was done by Barrio and Blair. It means quality from the analysis. And scientists like Barrio and Blair ने comparatively species को study किया, जो differences थी find किया. In addition to courtship and acoustic behavior, various other kinds of taxonomic के अलावा जो courtship और acoustic behavior के taxonomy and further when we talk about behavior characteristics are also helpful in species for example, in addition to courtship and acoustic behavior, various other kinds of elements have taxonomic value. Pattern of webbing constructed by mites and caterpillars various levels their classification. It means कि जिस पैटर्न के ऊपर mites और caterpillars हैं अपने webbing construction करते हैं उसको भी हम यूज करके species हैं हम identify कर सकते हैं. Anthidium and Dianthidium recognized on morphology gender और Dianthidium हैं बी के दो चीज़ हैं तो recognize करना difficult काम था but they on basis of their morphological ground but that all species of Anthidium construct net from cotton plant net from resinous plant and osmotic fiber. इस मेन के जो पास और डाइएंथीडियम बेसिकली ये बी के टू जेनरा हैं और बर्ड को स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं ये दो हैं डाइएंथीडियम इनके अंदर है इनकी वेबिंग कंस्ट्रक्शन देखा गया एक उनमें एंथीडियम थे वो अपने नेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते थे कॉटनी प्लांट फाइबर से जबकि एंथीडियम थे कंस्ट्रक्ट नेस्ट फ्रॉम resinous plants and from and are small pebbles. And the use of extraneous materials in construction of nest characteristics at various levels of berry swarms and egg worms. The egg cases of praying mantids have a specific species specific. Right, these behavior characters that are characteristics of tags are rare. For example, examples are the use of bird in nest building, swallows, and egg contains certain comfort moments in the birds and moments in insects. Attention has been directed strongly at the
comparison of closely related species that the diagnostic value of behavior is pattern at the level of higher taxa has gone largely unexplained. However, different scientists are working on these to use behavior characters at higher taxa. It means कि behavior characters हैं ये ज़्यादातर species लेवल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया गया है, लेकिन हायर टैक्सा के अंदर इनके रोल को इतना किया गया। तो रिसेंटली साइंटिस्ट इस फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं कि हायर टैक्सा के अंदर डिफरेंट हैं उनके अंदर स्टिक्स को क्या किया स्टडी किया। नेक्स्ट characters are called ecological characters and well established that every species has its own niche in nature tending to different strategies in differences, selection, breeding, and tolerance to various physics, distribution and resistance to predator, competing pathogens, uh, factors. Means जब भी हम स्पीशी की बात करते हैं, हर जो स्पीशी है वो उसकी नेचर के अंदर अपनी खास निच है जहाँ पे वो स्पीशी रहती है और वो अपना एक रोल क्या करती है वो प्ले करती है। और ये जो उसका रोल है उसकी नियरेस्ट स्पीशीज़ हैं उनसे भी क्या होता है वो डिफरेंट होता है। और इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न यह है कि हर स्पीशी ने खुद टाइप ऑफ अडॉप्ट किया हुआ है ताकि वो दरमियान जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन है फूड बेस्ड शेल्टर के लिए उसको कम करना पड़े, सर्वाइवल को क्या कर सके इसका बढ़ा सके। टाइप ऑफ हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, हम उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं बेसिक स्टडी करते हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ हैव डिफरेंट इकोलॉजिकल रोल्स। जब हम देखते हैं तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ को क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फूड प्रेफरेंसेस के देखें, प्रेफरेंसेस डिफरेंट जो स्पीशीज़ होती हैं उसके अंदर फूड प्रेफरेंसेस क्या होती है वो डिफरेंट होती है। और a number of sibling species were discovered as a result of discrepancies in food preferences. For example, apple and blueberry, मैगोट यानी हमारे पास एप्पल और ब्लूबेरी मैगोट है। बेसिकली ये हमने स्पीशीज डिस्कवर की हैं, उसके रीज़न क्या है कि बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल दे आर मोर और लेस सिमिलर बट but their food preferences, one of them has food preference apple and one have food preference berry. That's why due to this food preferences we actually classify two species on the नेक्स्ट इज दैट इज हैबिटेट सिलेक्शन। तो हर जो स्पीशी होती है उसका अपना एक हैबिटेट सिलेक्शन होता है जिस स्टेज को क्या करती है वो सिलेक्ट करती है, उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करती है। तो डिफरेंट जो है स्पीशीज़ हैं उनके डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं। तो वो हैबिटेट्स हम जो क्लोज स्पीशीज़ हैं उनके अंदर करके हम टाइप ऑफ जो स्पीशीज़ हैं हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रीडिंग सीजन। व्हाट इज ब्रीडिंग सीजन? एवरी स्पीशीज हैज इट्स ओन सीजन। जब आप ब्रीडिंग सीजन को इकोलॉजिकल फैक्टर के तौर पर लेंगे तो जो रिलेटेड स्पीशीज होती हैं के अंदर भी जो ब्रीडिंग सीजन होगा अपने टाइम के ऊपर होगा। तो अगर हम ब्रीडिंग सीजन को हम यूज़ करेंगे तो फिर चीज़ को क्या कर सकते हैं इकोलॉजी के ऊपर। हर स्पीशी खास किस्म की एल्टीट्यूडल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी। अगर आप क्लोज रिलेटेड स्पीशीज को भी देखें एल्टीट्यूडल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है तो उस फैक्टर की वजह से आप डिफरेंट स्पीशीज को क्या कर सकते हैं रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस टू प्रीडेटर भी हर जो स्पीशी है उसके अंदर डिफरेंट है, तो आप इस इकोलॉजिकल स्पीशीज को हेल्प ले सकते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। पैथोजन जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लासिफाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज ऑन द factors and when two closely related species coexist in general area they avoid fatal competition by species specific characteristics। it means कि जब आपके पास दो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज होंगी और आपने उनको फाइट करना है फिर वो ऐसे मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे ताकि वो है उसको क्या कर सकें वो रिड्यूस कर सकें
और वो एक खास किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर रहेंगे, खास किस्म की उनकी कुछ होगी that specific niche characteristics can be used to classify two clothing species. So say that ecological factors are important species who are not classified on the basis of other taxonomic character, then for them we use others and characters that can be helpful find different species. And of sibling species were discovered as a result of this was got as I already told you that due to food expenses both the species were recognized and many aspects of life cycle such as lifespan, fecundity and length different in close species. It means कि जब हम हमारे पास टाइप ऑफ स्पीशीज जो क्लोज रिलेटेड हैं रिस्पेक्ट में रिलेटेड हूँ क्लासिफाई करने में फिर हम जो है उनके ब्रीडिंग सीजन को देखेंगे स्पीशीज को रिलेटेड हों या आप इस करेक्टर को देख के कर सकते हैं एंड निच स्पेशलाइजेशन इज अवर मोर एनिमल दैट सबस्ट्रेट स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल specific plant is among insects and migrators. And next is ecological also occur on populations of the same species. Indeed, widely spread species exhibit ecology of other populations, particularly population. And parasites and symbiotes also help. They are actually basically ecological factors that can be used to classify different type of species. And in several instances, sibling species were discovered because their whole parasites were different. It means बाद जो हमारे पास स्पीशीज हैं इस वजह से हमारे पास डिफरेंट हुए कि जो पैरासाइट्स क्या होते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर इसके लिए डिपेंडेंट होते हैं उसके अंदर डैमेज करते हैं हम उसको पैरासाइट कहते हैं बट जनरल पैरासाइट अपने नहीं करते लेकिन कर भी सकते हैं लेकिन जनरली वो नहीं करते हमारे पास बाद ऐसे स्पीशीज जो सिबलिंग स्पीशीज थी जो आपस में क्लोज रिलेटेड थी एक ही कंसीडर कर रहे थे बट एक्चुअली दे वर स्पीशीज and these sibling species in different discovered because of their parasites because two sibling species these parasites were different and when we try the parasites them as a different species for example previously undescribed species of octopus discovered in California on parasites यानी कैलिफोर्निया octopus उसकी स्पीशी को डिस्कवर किया parasites थे and new species of termites was discussed nest contained different set of termitophile Daphilini beetles that did the nest of a previously known species like that parasites evolve together with their host and their host parasites are also important in contributing name कि जो स्पीशीज हमारे पास ऐसी हमारे पास टैक्सोनॉमिक हेल्पफुल ना हो उनको क्लासीफाई करने के लिए ऐसी पैरासाइट ऐसी जो स्पीशीज हैं उनके लिए हम ये पैरासाइटिक रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं और हम डिफरेंट क्लोज स्पीशीज के पैरासाइट्स होते हैं डिफरेंट स्पेस के ऊपर डिफरेंट स्पीशीज को डिस्कवर किया गया नेक्स्ट कैरेक्टर्स आर basically geographic characters and each taxon to higher taxa as a geographic range since this range changes as the taxon evolves
and intimate relation exists between systematics and biogeography. Most biogeographers are systematics, यानी जो हम हमारे पास जियोग्राफिक फैक्टर्स हैं कि हम जियोग्राफिक फैक्टर्स को भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज को क्लासिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। और एज यू नो कि हर स्पीशी की खास किस्म की जियोग्राफी प्रेजेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसने जो है खुद को अडॉप्ट किया होता है। ये जो अडॉप्टेशन हम जियोग्राफिकली देखेंगे, ये भी हमें प्रोवाइड करते हैं कि आप जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें, और इसको आप लेंगे और आप क्या करेंगे, आप क्लासीफाई करेंगे। जब भी हम और जनरली जब हम जियोग्राफिक कैरेक्टर्स की जब बायोजियोग्राफी हम उसको 6 जोन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और जोन्स के अंदर एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। और जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो फिर प्रोवाइड करते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जो हमारे पास सिस्टमैटिक्स बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बेसिकली बायोजियोग्राफी, और वो बायोजियोग्राफी एक्सपर्ट थे, और वो बायोजियोग्राफी से सिस्टमैटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। एंड पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन often provide decisive clues classifying confused taxonomic picture and for testing taxonomic hypothesis. It means कि जब हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ होंगे और हम होंगे क्लासीफाई करने में, ये जो हमारे पास पैटर्न्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वो कहाँ इस लोकेलिटी के अंदर प्रेजेंट है, उनकी कौन सी जियोग्राफी है, आपको एक देता है और आपकी उस कंफ्यूजन को करता है। और फिर जो भी आपने हाइपोथेसिस लगाना है, तो वो जियोग्राफिक फैक्टर्स की वजह से आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको लगा सकते हैं। And when we talk about geographic factor, they are also important at two levels. On two levels, microtaxonomy, and they are helpful. And microtaxonomy, they are involved in providing information for sympatric allopathic relationship of population, and to sympatric population in reproductive condition can never be specific. The mapping of population, subpopulation, subspecies, and allopathic species is indispensable in the delineation of typic species and superspecies. It means geographic factors are helpful at micro level. Microtaxonomy, how they are helpful. Microtaxonomy helpful for establishing sympatric allopathic relationship of populations that are very necessary for their studying, and two allosympatric population in reproductive conditions can never be conspecific. That's why the mapping of populations, subspecies, and allopathic species is indispensable in the delimitation of typic species and superspecies. And when we talk about role of geographic characters at microtaxonomy, in microtaxonomy, an understanding of relationship of taxa is often helped by an analysis of the distribution, and two questions are particularly important for this. What is the distribution? Nearest relative sister group of the study taxon has a disjunct range. What is the probability of the range distinction? So there are two type of isolation where that are helpful for studying different type of animals. One of them is called primary isolation, and in primary isolation there is establishment of founder population through dispersal. It means primary isolation, the establishment of new species is formed through their dispersal. Third, in secondary isolation, that is the fracture of a previously continuous range by a new distributed barrier across the and that's why we can say that the geographic factors are very helpful tying the primary isolation and secondary isolation of different
species. And knowledge of Earth history and geological record often permits one to decide whether the isolation is primary or secondary, and more important, for how long a time the isolates have been separated. The fact that birds on Galapagos Islands had flown adjacent South America perfectly clear to Darwin. The fact that the fauna in Hawaiian Islands have caused by transoceanic colonization has also been evident. The same conclusion is inevitable for all oceanic islands in the season. You can say that these primary isolations can be are very helpful for studying different type of species, and depending upon dispersal facility of a taxon as secondary isolation is more and course of and disjunctions. Some groups such as earthworms and primary freshwater fishes have very low dispersal facilities. In such groups, almost any junction is secondary or caused by plants or by climatic vegetational shifts such as rain junction caused by Pleistocene ice caps or by post-Pleistocene shifts. So we can say that these geographical factors are very helpful studying different characteristics of closely related species. And when we have confusion about different species, then we look at their geographical characters, their distribution pattern, their locality, their dispersal role, primary isolation, secondary isolation, and these basically geographical characters are helpful classifying species to different kinds that of are necessary to classify these organisms. So हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का जो करेक्टर्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम स्पीशीज हैं उन रेंज को देख सकें, उनके डिस्पर्सल को देख सकें, उनके आइसोलेशन, प्राइमरी आइसोलेशन, सेकेंडरी आइसोलेशन को देख सकें, और वो किस तरह फॉर्म हुई है स्पीशीज। हम उन फिनोमेना को ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये थे बेसिकली हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स जिनको हम यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज़ करेंगे। इसीलिए हमारे पास ज़्यादा कैरेक्टर जितने होंगे आसानी से हम जो डिफरेंट स्पीशीज हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं।